Today in our session, we are going to do the same, the chapter first, that is the portrait of a lady, penned by Khushwant Singh with NCERT. When I started the chapter, I told you one thing, that this chapter is about, it is a pen portrait of a woman, that is the grandmother of Khushwant Singh, and their bonding, उन दोनों का जो एक बॉन्ड था, ये उसके बारे में. दिस इज वन ऑफ द, उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उसके अंदर से ये एक स्टोरी है. दिस टेल्स अबाउट अ वुमन जो उस टाइम में, से इट वाज अराउंड 1900s, who believed in education, who was not like the common woman who revolted. ये उनके बारे में, right? So we are starting with the chapter. There are certain expressions which you may be asked in your exam to evaluate or to answer. But apart from आपके पास, besides you have some questions, आपके जो हैं कुछ questions यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे the three phases of the author's relationship, the three reasons why author's grandmother was disturbed, the three ways she spent her time, the odd way in which the author, these are repeated questions which you can expect in your exams. Besides them, there were, मतलब कि इसके अलावा भी आपके जो है कुछ questions आते हैं, and these questions are from within the chapter. ये आपके chapter के अंदर से आते हैं. तो we need to be extra cautious while we are doing, क्योंकि अगर अब हम ये आदत डाल देंगे, so this will be a routine for all our chapters, as well as I can say that this would be one which would help you out in your 12th standard also. Most of the time in our 12th standard, we don't have, हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम अंदर से नहीं पढ़ पाते. My grandmother, like everyone, everybody's grandmother was, हम जब हम grandmother बोलते हैं, तो the first thing what आजकल क्या है, मतलब अभी तो I can say that grandmothers are pretty beautiful. They are pretty beautiful. I've seen the grandmothers who are now so young. In fact, they look young. It's not that कि उनकी age है, but they look young. They keep themselves, you know. बट उस जमाने में तो ग्रैंड मदर का मतलब ही होता था अ पर्सन विद wrinkled फेस. तो इसीलिए ही सेज दैट लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled, मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियां थी. फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, इन पिछले कितने सालों से शी लुक द सेम. पीपल सेड that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. This is a question which has come in the paper, that why was it hard to believe that the woman had a husband? This is because जो author है, जो narrator है, वो उनको एक बच्चे की तरह एक innocent way में देख रहा है. उसको लग रहा है कि ग्रैंड मदर मीन्स, अब मतलब वो एक माइंड सेट है, अ स्टीरियोटाइप. तो फॉर हिम इट वाज ओनली एन ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन की शादी कैसे हो सकती है? हाउ कुड शी बी यंग? वो तो इतने सालों से एक जैसी लग रही है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो हमारे चेहरे की जो पिक्चर होती है, that hung above the mantel piece in the drawing room. mantel piece होता है नॉर्मली ड्राइंग रूम के अंदर, नीचे वो मतलब कि आग वगैरह लगाते, मतलब कि दे कीप इट फॉर द बॉनफायर, और उसके पीछे का जो शेल्फ होता है वहां पर. He wore a big turban, turban मतलब यहाँ पर पगड़ी.
and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी फोटो जो थी उसे देखकर लग रहा था जैसे वो 100 साल के हों. He did not look like the sort of person who would have a wife or children. भाई उनकी शादी कैसे हो सकती है? उनको देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी यंग थे. वो तो इतने बूढ़े हैं. He looks so old. How can he be married? As he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. What does it mean? It means कि वो जो है इतने बूढ़े लगते हैं कि ऐसा कभी नहीं लगता that he would have been young, he could have been married. As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. और अगर कोई मुझे ये बोलता था कि तुम्हारी ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत यंग थी, सुंदर थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि that thought was almost revolting. मतलब वो तो ऐसा था जैसे गुस्सा दिलवाने वाला. How it is possible? She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part. और जब वो ये बोलती थी कि वो यंग थी, वो खेलती थी, तो हाउ वो लोग कैसे देख रहे हैं उसको कि भाई बूढ़ी औरत है और वो जो बूढ़ी औरत है वो खेलती थी. मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो दादी थी वो कभी बच्ची भी थी. द ग्रैंडमदर वुड हैव बीन अ चाइल्ड आल्सो. वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि ग्रैंडमदर जो है वो इतनी बूढ़ी और वो जो है साड़ी डालकर वो खेल रही है. ये सोचकर he felt it was absurd and undignified. मतलब ये तो गलत बात है. It was not respectful. And we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. और हमें जो है हम इन चीजों को जो है ऐसे फेंकने वाला, मतलब जस्ट लाइक अ फॉल्स स्टोरी हम उनको लेते हैं. फेबल्स होते हैं आपकी स्टोरीज. She had, अब ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है, that is about the physical look of the grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. मतलब उनका जो था, she was short, थोड़ी मोटी थी and थोड़ी झुकी हुई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर जो है सिर्फ झुर्रियां थी. Wrinkles from everywhere to everywhere मतलब she had only wrinkles on the face. No, we were certain she had always been as we had known her. मान ही नहीं सकते वो कभी यंग थी, वो ऐसी ही रही होंगी. Old, so terribly old that she could have not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. हो ही नहीं सकता कि वो कभी यंग रही होंगी. कैसे पॉसिबल? How is it possible? She could, अब ये जो आया है, this is one of the very important expression that has come in the exams many times. That has come in the exams many times. She could never have been pretty, but she was always beautiful. Now, अगर हम लोग बच्चे, if we look into the dictionary meaning, तो pretty and beautiful दोनों जो है they are synonyms. लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब है she could have never been pretty, मतलब यहाँ the pretty is for the physical beauty, but she was always beautiful, मतलब her aura, a divine beauty. Kindly notice this, note कर लीजिएगा बच्चे. यहाँ पर जो है it means she was not having the physical beauty, but she had the divinity on her face. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of a rosary. मतलब वो चारों घर के अंदर जो है वो चलती रहती थी अपने स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब बिल्कुल सफेद साड़ी,
और एक हाथ पर उनके जो है बीड्स होती थी और दूसरा हाथ उनके कमर को मतलब वो उनकी कमर झुकी हुई होती थी, स्टूपिंग मतलब झुका हुआ, उसको पकड़ते। Her silver locks, this is a metaphor and this has come in the exam. Silver locks here is referring to her gray hair. उनके सफेद बाल was scattered untidily over her pale puckered face. उनका जो टेढ़ा मेढ़ा चेहरा था उस पर उनके बाल उलझे हुए रहते थे. And her lips constantly moved in inaudible prayer. और वो जब भी उनको देखते वो कुछ ना कुछ प्रे कर रही होती थी. इनऑडिबल मीन्स विच कुड नॉट बी हर्ड, जो हम सुन नहीं सकते थे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. This entire passage is about the beauty that is a divinity, the internal beauty, not the external beauty. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हाँ, वो बहुत सुंदर थी. उन बिल्कुल वैसी. She was like the winter landscape, मतलब जब आप सर्दियों में अगर आप माउंटेन्स को देखोगे तो चारों तरफ कैसा लगेगा, जैसे बर्फ से घिरा हुआ है. तो उनका जो फिजिकल लुक था, उनके बाल सफेद थे, वो सफेद साड़ी पहनती थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही शांत लगती थी. एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, मतलब एकदम मतलब कि उनके बाल भी सफेद थे, वो गोरी भी थी, ऊपर से वो सफेद साड़ी पहनती थी, तो ऐसा लगता था व्हाइट सेरेनिटी. सेरेनिटी मीन्स प्योरिटी, समथिंग वेरी पायस. बिल्कुल ऐसा लगता था उनके चेहरे पर शांत, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन था. मीन्स शी डिड नॉट हैव द फिजिकल ब्यूटी. शी डिड नॉट लुक लाइक what you call as Nora Fateh or Deepika, but she had a divinity on her face. This is one of the very important one. Now, अब जो ये जो पैराग्राफ है, ये आपके पेपर में आ सकता है. Describe the friendship of the old woman and the narrator in village. ये जो पहला है ये विलेज है. ये वाला जो नेक्स्ट है ये आपका व्हेन माय पेरेंट्स वाला जो है, दिस इज इन सिटी. एंड उसके बाद जो थर्ड वाला है, द थर्ड फेज इज व्हेन ही हैड गॉन आउट. ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आई हैड शोड यू दीस 3 क्वेश्चंस, द 3 phases of author's relationship with the grandmother. ये वाला है. So the very first is my grandmother, I were good friends. यहाँ पर the friendship is not which you have with your peer group. आपके peer group के साथ जो आपका friendship है वो नहीं. यहाँ पर एक आपस में तालमेल, a harmony. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning, get me ready. ये है describe the routine of the author in village. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotone sing song while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know it by heart.
अब वो क्या करती थी, इन अ मोनोटोनस, मतलब एक ही जैसा बोरिंग, वो अपना जो है प्रेयर सुनाती थी, जिससे कि बच्चा लर्न करे। लेकिन बच्चा क्यों सुनता था? आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk. ये वो टाइम नहीं था when the books were there. This was a time when books were there, but at the same time most of the things were written on the chalk. आपकी स्लेटी बोलते थे हम हिंदी में। A tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it over. वो पूरा एक बंडल बनाती थी जिसके अंदर इसकी छोटी मोटी किताबें, इंक पॉट, सब कुछ होता था। After a breakfast of a thick stale chapati, stale मतलब पुराना, रात का बचा हुआ, with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dog. कुछ वो इनको नाश्ते में देती और बाकी वहां के जो डॉग्स थे उनके लिए ले जाती। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. वो इन पर नजर रखने नहीं जाती थी, वो इसलिए जाती थी क्योंकि वो वहां पर जो है टेम्पल में बैठकर शी वुड बी रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वाइल बच्चे जो हैं वो जो छोटी मोटी जो गांव में जो भी सिखाया जाता था वो पढ़ने की। द priest taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. बच्चे बाहर बरामदा में खड़े होकर जो मतलब कि वहां जो पंडित होते थे वो सिखाते थे, या तो उनके जो बेसिक, नॉट द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये हिंदी गुरुमुखी वो, एंड जो मदर ग्रैंड मदर होती थी वो बैठकर अंदर गीता या फिर स्क्रिप्चर्स मतलब हमारे ग्रंथ, the holy books. When we had both finished, we would walk back together. जब वो खत्म हो जाता था तो दोनों वापस जाते थे। You can see there is alliteration here in this line. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो एनिमल्स को बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए वो जो डॉग्स होते थे उनके लिए शी वुड बी टेकिंग दी फूड। दिस इज द सेकेंड फेज, और इस वाले में से आपके आता है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। द टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन दे शिफ्टेड टू सिटी and when they shared the same room but not the thoughts. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब ना तो वो स्कूल छोड़ने जा सकती थी और ना ही वहां पर कुत्ते होते थे जिनको वो खाना खिला सकती थी, तो वो अपने घर के बाहर जो चिड़िया होती थी उन्हें खाना खिलाती। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up, get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her the English words and the little things of Western science and learning, law of gravity, Archimedes' principle, world being round. This made her unhappy. Why was the grandmother unhappy? थोड़े टाइम तक, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हुआ था, तो वो रेगुलरली उसके से पूछती थी और ये बताता था स्कूल के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, साइंस मैथ्स वगैरह, और वो दुखी हो जाती थी। क्यों? दो रीजंस and these are the she could not help me with my lessons, she did not believe in the things they thought, and was disturbed there was no teaching of God and scriptures. This is the answer. एक, वो उसको पढ़ा नहीं पाती थी। दूसरा, उसको उनको लगता था कि स्कूल के अंदर हमें भगवान, हमारे ग्रंथ, इन सब के बारे में पढ़ाना चाहिए।
One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. अब ये second question है कि what was the grandmother's view about music? Her views about music, उनके विचार म्यूजिक के बारे में. This is also a question. उनके लिए, for the grandmother, to her music had lewd associations. Lewd मतलब नीचा, very petty, very cheap. उनके लिए म्यूजिक जो है that was a kind of cheap association. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनके हिसाब से जो नचैया होते हैं, those who dance on the roads, जो beggars होते हैं, ये उनके लिए होता है, शरीफों के लिए नहीं होता. But she did not utter any word. She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन वो शांत हो. She rarely talked to me after that. उसके बाद तो शायद ही उन्होंने उनसे बात किया. The reason is she was not much comfortable with the kind of education he was getting. But at the same time, she was not a woman जो कि शोर मचाएंगी, ये क्या पढ़ाया जा रहा है. She was very calm. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. The common link is the room. यहाँ पे जो common link है वो room है, वो भी खत्म. She rarely left her spinning wheel my grandmother accepted her seclusion with resignation. Again, an important question of the paper. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion का मतलब होता है loneliness. Seclude का मतलब होता है अलग हो जाना. With resignation यहाँ पर meaning है with acceptance, with honor. उन्होंने अपने इस अकेलेपन को पूरी तरीके से अपना लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से शाम तक वो बैठकर अपना स्पिनिंग चलाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. जब वो रोटियों के टुकड़े बनाकर दिन में चिड़िया को खिलाती थी, तो वहां पर पूरा वेरिटेबल बेडलैम मतलब एक बड़ा सा जैसे चादर हो, बहुत सारे. यहाँ पर इट मीन्स a number of hundreds of sparrows would be there, और वो चरुप यानी कि चहचहाते हुए. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. वो स्माइल करती जब चिड़िया उनके ऊपर बैठती, लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी. शूड मतलब उनको भगाना. It used to be the happiest half hour of the day for her. This question has come in many schools. Which was the happiest half hour of the day for her? That was when she used to feed the sparrows. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मतलब उसको ग्रैंड चाइल्ड को लगा कि वो इतनी बूढ़ी है और 5 साल के लिए इसे जाना है, तो हो सकता है कि दादी जो है वो प्रोटेस्ट करें. I was sure my grandmother would be upset. मतलब she would protest because at her age one could never tell, means she could breathe her last breath anytime. किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है. But my grandmother could. She was not even sentimental. वो तो रोई भी नहीं. She came to leave me at the railway station but did not offer show any emotion.
Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने कुछ नहीं कहा. वो छोड़ने आई ट्रेन के पास. बस इनको गले लगाया, इनके माथे पर एक मतलब उनको चूमा, और उसके बाद वो अपना प्रेयर बोलती रही. I left, I cherished the moist मतलब गीला, मतलब उन्होंने उनको जो है चूमा था, the kiss, and that was the last contact, क्योंकि बहुत साल पहले दादी was very close to the grandchild. अब वो बड़ा हो गया था तो वो थोड़ा distance रखती थी, but that was not so. मतलब इसको तो लगा था कि 5 साल बाद शायद ये दादी को वापस ना देख पाए. After 5 years, I came back home and was met her by at the station. जब ये 5 साल बाद वापस आए तो भी वो वहां पर जो है she was there to welcome him. She did not look a day older. She still had no time for words. While she clasped me in her arms, I could hear her reciting a prayer. उन्होंने इसको गले लगाया, लेकिन वो तब भी वही अपने prayers बोल रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. मतलब पहले दिन भी इसने देखा कि अभी भी वही आधा घंटा अपनी चिड़िया के साथ. पहले तो आधा ही घंटा होता था, अब थोड़ा लंबा हो गया था, और थोड़ा मजाक करते हुए, रिब्यूक्स मतलब गुस्सा करते हुए. ये वाला जो है, this question is that how did she welcome the narrator when he came back from abroad? या फिर the same question can be what the same can be what change took place in the old woman when he came back. These are the two kinds of questions that comes from this particular stanza. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. उन्होंने जो है उस दिन पहली बार उन्होंने अपने रोजरी बेट्स को नहीं गिना, वो पड़ोस की औरतों को बुलाया, उन्होंने एक ढोल लिया और वो गाना गा रही थी. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. मतलब काफी घंटे वो थंप मतलब बजा रही थी. द सैगिंग मतलब वो लटक रहा था. द डायलेपिटेड मतलब थोड़ा सा खराब था वो, जो आपका जो ड्रम था वो थोड़ा फटा हुआ था. एंड sang of the homecoming of warriors. और वो किस कैसे गाना गा रही थी? जो वॉरियर्स होते हैं, जो जंग जीत कर आते हैं, मतलब उनके लिए उनका पोता अब्रॉड से पढ़कर आना किसी जंग से कम नहीं था. That shows that she respected education. इससे ये साबित होता है कि वो एजुकेशन की इज्जत करते थे, क्योंकि जब वो वापस आया तो she was happy and she sang the song of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. इन लोगों ने फिर उनको मना किया कि इतना अपने ऊपर स्ट्रेस मत. The next morning she was ill. ये है आपका what did the grandmother think would happen to her? The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near.
कुछ लोग होते हैं बच्चे जो अपने मतलब की जो डेथ है उसको फोर्सी कर सकते हैं. There are many people who can foresee their death, and it's really you can say something a magic, or you can say something beyond belief. My own grandmother जो थे, grandfather in fact, मतलब मेरे नाना जी, उनका ये था कि he was मतलब कि उनको ना मतलब शौक था to write the जन्म पत्रीज and all. He was not like a पंडित और all, उनको शौक था. He had that passion. तो इन द मीन मतलब जब भी वो फ्री होते थे तो ही वुड बी राइटिंग दी जन्म पत्रीज ऑफ ऑल. ही वुड बी राइटिंग व्हाट मतलब की पीपल वुड बी लाइक. उन्होंने सबके लिए लिखा हुआ एक डायरी है जिसके अंदर ही हैज रिटन एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. यू कांट बिलीव मतलब कौन कैसा रहेगा, किसकी कैसी मतलब की लाइफ रहेगी, व्हाट विल बी द. तो हम लोग जो है ना उसको सच में मजाक में लेते थे. हम लोगों का ये होता क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं करते हैं, डेफिनेटली मैरिज वगैरह में, बट इतना नहीं बहुत जैसे डीप में वो लिखते थे. ये मतलब वो खाना प्रिय है, इसको खाना बहुत शौक है ऐसे. तो व्हेन ही वाज जब वो छोटे थे तो वो अपनी मेरी मम्मी और मेरे मामा जी वगैरह को ही यूज्ड टू टेल दैट आई डाई ऑन द डे व्हेन जो उनके चीफ मिनिस्टर थे एंड ही वाज आल्सो द हीरो एमजी रामचंद्रन. So the day when MG Ramachandran will die, I will also die. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग मम्मी बताती है कि ये लोग खूब मजाक उड़ाते थे कि भाई एमजी रामचंद्रन तो भाई फिल्म एक्टर है एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, और आप उनसे मतलब क्या आप उनसे अपने आप को कंपेयर क्यों करते. तो ही वुड टेल दैट हम दोनों की जो जन्म पत्री है वो तकरीबन सेम है, बट मतलब कि ड्यू टू सर्टन अदर एलिमेंट्स आई एम वर्किंग इन द गवर्नमेंट एंड वो मतलब कि ही इज देयर इन दी. बट ये लोग वही था, मजाक तो होता ही था. कोई कैसे मानेगा अगर मुझे कोई अगर आप मुझे आकर बोलोगे मैम आपकी जन्मपत्री और अमिताभ बच्चन की एक है, तो मैं तो स्माइल ही करूंगी, हंसूंगी मैं तो. बट यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव 24 December 1988, it was the same day when MG Ramachandran died and it was the same day when my grandfather died. Can you believe? It was the same day. And my grandfather had nothing. उन्हें कुछ नहीं हुआ था. He was having only mild fever. He was taken to the hospital. तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब कि he's 80 के थे, 80 years के थे, तो mild fever है, थोड़ा सा वो चढ़ाना है. But within gap of 2 hours इन दोनों की डेथ हुई. एंड द प्रॉब्लम वाज कि जब एमजीआर की डेथ हुई तो वहां पे वायलेंस था एंड हम लोगों को जो है गाड़ी में ब्लैक कलर फ्लैग लगा के इनकी डेड बॉडी को लेकर आए थे. तो सर्टेन पीपल हैव दैट इंट्यूशन, कुछ कुछ लोगों को ना इंट्यूशन होता है कि व्हाट कैन हैपन. एंड द सेम थिंग वाज मे बी दैट इज कॉल्ड एज अ विल पावर. शायद वो अपने पोते को वापस आने तक देखने की उन्होंने जो है इच्छा रखी थी. शायद वो चाहती थी कि उनका पोता वापस आ जाए, उसके बाद वो मतलब कि उनकी डेथ हो. She told her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to prayer, she was not going to waste any more time talking to us. और उन्होंने जो है बहुत स्ट्रिक्टली बोला that पूरे जिंदगी मैंने जो है भगवान का नाम लिया, लेकिन अब जब मेरे को छोड़कर जाना है तो मैंने जो है भगवान का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो गाना गा रही थी ना. तो वो कहती है कि अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, आई एम गोइंग टू बी प्रोटेस्टेड. इन लोगों ने मना किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स मतलब अपनी माला जपना. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. ये कुछ सोचते उससे पहले ही सचमुच में ही ग्रैंडमदर की डेथ हुई. A peaceful pallor spread on her face. This is actually oxymoron.
पीलापन जो होता है वो बीमारी का निशान है, और पीसफुल मतलब एकदम कंटेंटमेंट। बट यहाँ पर कहने का मतलब है, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीमोरन एंड दिस इज ऑल्सो मेटाफॉर। कहने का मतलब है उनका एकदम चेहरा एकदम जो है सफेद हो गया, एकदम जो है जैसे डेड बॉडी होती है, एंड शी वाज डेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important and most repeated question, ये वाला question, this one. The way in which the sparrows express their sorrow when the author grandmother was dead, one of the most important one, repeated one. She lifted her off, lifted her off the bed, and as is customary, laid her on the ground, covered her with a red shroud. Shroud जो होता ना बच्चा, we use it for shawl, लेकिन जो shroud word होता है, that we use when we are laying the shawl on dead body. जब हम किसी की डेड बॉडी पर शॉल लगाते हैं उसको हम श्राउड बोलते हैं. We don't use it for the normal shawl. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. अब थोड़ी देर के लिए वो लोग सब वहीं पर थे, फिर उनकी डेड बॉडी छोड़कर वो लोग बाकी अरेंजमेंट करने गए. In the evening, we went to her room with crude stretcher to take her to be cremated. Crude stretcher होता है वो, मतलब कि जो stretcher जिसके अंदर dead body को रखकर लेकर जाते हैं. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अंदर जो है रोशनी आ रही थी. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. इनको रुकना पड़ा क्योंकि पूरे बरामदा और जहां तक उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, शी ले डेड एंड स्टिफ, मतलब डेड बॉडी इज स्टिफ. डेड बॉडी हमेशा स्टिफ होती है, ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो. वहां तक सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया था. बट what was the beauty? There was no chirruping. चिड़िया चहचहा नहीं रहे थे. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. इनको बुरा लगा, इनको लगा वो खाना खाने आए हैं, तो उनकी मम्मी रोटी लेकर आई. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. उन्होंने वैसे ही टुकड़े करके उनको दिया. The sparrows took no notice of the bread. उन्होंने तो देखा तक नहीं. इससे क्या पता लगता है? The sparrows had smelled. उन्होंने उस चीज को शायद acknowledge कर दिया था that the grandmother was dead. तो वो अपनी दुख बताने वहां आए. When we carried my grandmother's corpse मतलब dead body, they flew away quietly. चुपचाप चले गए. उस दिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और वो खाना तो किसी ने खाया नहीं था, तो नौकर ने ही उसे उठा के बाहर फेंका था. So that was what we call as a portrait of a lady, यानी कि a strong lady. ऐसे उस दिन आपको मैंने बताया था that ये रहा. You may be given the question, draw a pen portrait of the old woman. यहाँ पर पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच. यहाँ पर पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच. So in a very simple words, we can say that she was very simple, religious, animal loving, and principled.
you can use these 4 words to describe her. अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो you can use these 4 words to describe that the woman was simple, religious, animal loving and principled. फिर उसके बाद आपको क्या करना है क्लास 11, आपको इसके बाद इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करना विद एग्जाम्पल कि आपके अकॉर्डिंग व्हाई द वुमेन वाज सिंपल, व्हाई शी वाज रिलीजियस, व्हाई यू कॉल हर एज एनिमल लविंग एंड व्हाई यू कॉल एज अ प्रिंसिपल. तो आपको बताना है सिंपल मतलब शी वाज मतलब कि शी यूज्ड टू ऑल द टाइम शी वुड बी वेयरिंग हर व्हाइट साड़ी, शी वुड बी कीपिंग हर hands on her waist, she would hobble around in the home. Then she used to count her rosary beads in an inaudible prayer all the day long. Then in the village, she used to feed the dogs with the stale chapatis, and in the city, she would be busy in feeding the sparrows. जी एनिमल लविंग के लिए हो गया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिंसिपल. तो even though she did not like many things, like unko she was not that much convinced with the education of the city, she was not convinced with music, yet she did not protest. तो ये सारी चीजें जो है उनका एक पेन पोर्ट्रेट. So this is how the questions can come. Now in the very first, the 3 phases of author's relation में before he left the country to study, you can see और ये पेपर में मतलब कि you can expect these questions. तो 3 कौन कौन से थे? First is village, जब वो village में रहते थे. Then second is when they were in the city, and third is when he had gone to university. ये उनके 3 फेज थे. पहले फेज में they had very good friendship, they used to share everything. Second phase में it was a turning point, even though they shared the room but they could not share their thoughts. And तीसरे में when he had gone to university, he had got his own room. तो ये 3 आपके phases. The 3 reasons why grandmother was disturbed when he started going to city school. Pehla, she could not go and drop him. Secondly, she could not help him in his studies. And third, she was disturbed that there was no teaching of gods and scriptures. The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. तो एक वो स्पिनिंग व्हील में रखती थी, दूसरा she would be counting her beads, and तीसरा she would spend her time in feeding the sparrows. The odd way in which the author's grandmother behaved, ये मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को लिखवाया है. This one. This is the question, the same question. The way in which the sparrows express, this is one of the repeated question. ये वाला मतलब they all were there, they did not chirrup, they did not utter any word, even though the food was thrown to them, they did not take any notice of it. When the dead body was taken, they flew away quietly. Then अभी मैंने आपको जो है कुछ words बताए थे, simple, religious, animal loving, principle. यही वो questions हैं. The author's grandmother was a religious person. कैसे थे? Describe the changing relation between author and his grandfather. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? Yes. Unlike the other ladies, वो कभी शोर नहीं मचा. She never protested for anything. When she came to know that she was not able to help the grandmother,
grandchild, she kept quiet. When she came to know that music was taught, उनको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो शांत रही. When the author was given a separate room, she accepted her seclusion with resignation. तो ये आपके जो है मतलब की important questions. These 5 questions, pen portrait, then ये जो मैंने questions लिखे हैं, like what is the meaning of she accepted her seclusion with resignation, what was the old woman's thought about city education, what was her thought about the music, yeah, then what was the turning point in their friendship, what was their daily routine in the village, explain and expands of pure white serenity, breathing peace and contentment. She could never have been pretty, but she was beautiful. Iska matlab she was not physically beautiful, but she had the divinity on her face. Then why could not the grandchild believe that she was young and pretty? These are some of the other questions which have come from this chapter in the exams over the period. If you have done all these questions also, it's more than enough. So this was the chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh.